Where is the MOS finance? MOS finance is there. Not the Pankaj Chaudhary is not there. Pankaj Chaudhary is here. Yeah. You have to check your specs. They clear. Chipet hai, sir. Chipet. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'm honored that my party has asked me to start the debate on the budget. I want to first frame the scope of the debate. Under the rules and the tradition of this House, in a budget discussion, every subject, every ministry, every department for whom money is allocated and an appropriation is sought can be discussed. I think the House will agree with my framing of the scope of the debate. The first point I wish to make is the economic survey is prepared by the Economics Division of the Finance Ministry. A lot of people put on a lot of work and do a lot of research and analysis to prepare the survey. It runs to over 700 pages. The narration is about 450 pages, and the statistical appendix is about over 200 pages. I wonder whether the government and its key ministers read the economic survey. The most charitable view is that they don't care for the chief economic advisor. The uncharitable view is that while the chief economic advisor is bringing the government down to earth, what is happening around the country, I think the government and the ministers want to soar high and reach another planet as if we are not living on earth. There are a number of challenges listed in the economic survey. I'll take up only 4 challenges. Capital investment. For some years now, for almost 12 years, capital investment, gross fixed capital formation, is stuck at 30% of GDP. Net FDI in 2024-25 has collapsed to less than 0.09%. FPIs, foreign portfolio investors, are pulling out. Private investment, although companies are cash rich, is stuck at 22% of GDP. In this situation, where neither the public sector, nor the private sector, nor the foreign investor is investing in India, this government has cut capital expenditure. In the year that ended 25-26, they have cut capital expenditure by a whopping 1,44,376 crore. The centre has cut its capital expenditure by 25,335 crore, and what is worse is the state's capital expenditure, for which the centre gives advances, is cut by 1,19,041 crore. Should there not be an explanation? Why did you not give the money? Or did you impose conditions which the states can't fulfill? There must be a reason for that. No reason in the Honourable Finance Minister's speech.
The second challenge is unemployment. All of us agree, all of us should agree, in our constituencies, the most number of requests is for job. Youth unemployment is 15%. Less than 25% of the workforce is in regular employment. There is a shift to self-employment, and more workers are in the agriculture sector than there were 4 or 5 years ago. Only in a country with 144 crore people, only 195 lakh, that is less than 2 crore, are employed in a factory. Manufacturing, which is largely factories, is stuck at 16% for many, many years. I'll give you an example. The PM internship scheme was touted. Last year, the finance minister made that statement. Corporate houses were persuaded to offer internship. 1,65,000 offers came. Only 33,000 were accepted. Are there no young men and women to accept an internship in big companies? Only 33,000 accepted. And after 33,000 who accepted, 6,000 left the job. So what is wrong with the internship scheme? She touted it last year. She must explain why the scheme has totally failed this year. The third challenge is the slow growth rate. In paragraph 14 of the Honorable Finance Minister's budget speech, she said, and I'll quote that, the Reform Express is well in its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. The Reform Express is well in its way. Along with Vande Bharat and Tejas, they may even introduce a train called Reform Express. But the Reform Express is stuck. It's not derailed yet, but it is stuck. Yes, yes. Look at the nominal growth rate. The nominal growth rate in 2023-24 was 12%. In 24-25, it came down to 9.8%. In 25-26, the year which will end in a month, it's come down to 8%. Where is the Reform Express gathering momentum? Where is your bullet train? No bullet train is coming. You refer to the real GDP growth, But Dr. Surjit Balla, one of your strongest supporters, has mocked the real GDP growth. That's because your CPI inflation is 0.5%, your wholesale inflation is negative, your deflator is only 0.5. With these numbers, you can always make a GDP growth. But the nominal growth has come down from 12% in 23-24 to 9.8% in 24-25 and 8% in 25-26. I'm glad the Honorable Finance Minister is there. I'm pointing out, Madam, that your paragraph 14 of your budget speech is totally wrong and unacceptable. Yes. The last challenge, there are others who will touch upon the other challenges. No, you've got The 10 slow minutes left. fiscal consolidation. You can speak more. Now, fiscal deficit is a well-known measure, internationally accepted measure. I find that the government is moving away from fiscal deficit to debt to GDP ratio.
Dr. Rangarajan, one of the most knowledgeable economists in this country, has pointed out that the two are interdependent. If fiscal deficit comes down, the debt to GDP ratio will also come down. The debt to GDP ratio comes down, the fiscal deficit will also come down. It's two sides of the same coin. I won't elaborate on that. The fiscal deficit in 25-26 is 4.4%. She has achieved her target. But next year, it will come down only to 4.3%. And the revenue deficit in the current year will be 1.5%. And next year also, it will remain at 1.5%. Now, what is the FRBM target? FRBM target is 3% of fiscal deficit. And the revenue deficit, the ideal is to eliminate the revenue deficit, but it can be up to 1%. At this rate of consolidation, which Dr. Rangarajan in a very analytical article has called out as a mockery. At this rate of fiscal consolidation, it will take 12 years to achieve the FRBM target. The FRBM target was last achieved only in 1 year, 2007-8, on the fiscal deficit. But since then, the fiscal deficit is ballooned, and then they're trying to bring it down. But at this rate of fiscal consolidation, it's like taking baby steps. A baby steps will not allow you to run 100 meters or 1,000 meters race. And then what saved the Honorable Finance Minister, not because of higher revenues, but because of higher financial discipline, what saved her was she cut total expenditure by 1 lakh crore, and the RBI gave a dividend of 3 lakh crore. That is how it saved the fiscal deficit. But for these cruel cuts in capital expenditure, but for the bonanza received from the RBI, the fiscal deficit will not be 4.4%, it will be 5.5%. Other challenges listed in the economic survey will be taken up by my learned friends. Now I'm looking for the Honorable Mr. Shivraj Singh Chauhan. I'm the Honorable Mr. C.R. Patil. I'm amazed. Under one minister's charge, under one minister's watch, agriculture and rural development, there is a cut in expenditure of 60,000 crores. Shame. Agriculture has been cut by 6,985 crore. Rural development has been cut by 53,067 crore. Shame. Rural areas don't require any development. What is the minister doing? What are our officers doing? What are they doing throughout the year? That in 1 year you spend 60,052 crore less. On a Gram Sadak Yojana, and villages are crying for Gram roads, 7,201 crore is the cut. On Awas Yojana, the much doubted housing scheme, the cut is 22,331 crore. Don't our people require roads? Don't our people require houses? On grants and aid to states, the cut is 30,391 crore. You blame the states, but why don't you give them money? And there's not a word of explanation why this cut. Somebody in the cabinet, the Honorable Prime Minister must ask the minister and the ministry, why is there under your watch a 60,000 crore cut? Correct. I'm looking for Honorable Mr. C.R. Patil also. The Jal Jeevan Mission
was allotted 67,000 crore. You know what they spent? 67,000 crore. They spent only 17,000 crore. What is this going on? And where is Jeevan? Why is there a budget? People are dying because of polluted water, In Indore. contaminated water in Indore. Today we saw a story in the newspaper about a Dalit village in one of the states where 4 sisters committed suicide, and the reporter went to that village. It has no tap water, it has no public toilets, there are no personal housing toilets, Same. and then you don't spend on roads, you don't spend on housing, and the Jal Jeevan mission is cut 50,000 crore. Defense expenditure is at a low of 11.4% of total expenditure. This is the nationalism. Defense expenditure is 1.6% of GDP. 1.6% of GDP, and defense expenditure is 11.4% of TE, and this is an all-time low. Scientific departments, my good friend, a very suave friend, scientific departments did not spend 18,665 crore. Urban development did not spend 39,573 crore. Social welfare was cut by a round number, 9,999 crore. What are the ministers doing? Why are they not fulfilling programs and spending the money? Sir, I must compliment the Honorable Finance Minister. She has found a way. She has found a formula to mesmerize at least one half of the House. She throws schemes, funds, missions, committees. I counted 24. One half of the House applauded. But here is the situation. In Biopharma Shakti, she has allotted 10,000 crore in the next 5 years. This is already complete. This government has already completed 2 years. It's only got 3 years. How can it allot for 5 years? Be that as it may. Be that as it may. 10,000 crore for 5,000 years. She's optimistic. I congratulate her and wish her well for her optimism. 10,000 crore. Allocation in 26-27, 500 crore. Oh. Indian Semiconductor Mission 2.0. What happened to ISM 1.0? There's no mention. On the revenue account, 1,000 crore. Electronics Component Manufacturing Scheme, 22,919 crore has been expanded to 40,000 crore. Good. But the allocation is 1,500 crore. 3 dedicated chemical parks. At page 20 of the expenditure budget, there is a note which refers to the 3 dedicated chemical parks. But the outlay is 0. Scheme for container manufacturing, 10,000 crore in 5 years. At page 21, allocation is 0. National Fiber Scheme, Mega Textile Park Scheme, Mahatma Gandhi Swaraj Institute. I'm grateful that they remembered Mahatma Gandhi and they brought him back to a scheme. National Fiber Scheme, Mega Textile Park Scheme, Mahatma Gandhi Swaraj Institute. There are announcements, but where is the outlay? I couldn't find any outlay for any of these schemes.
champion small manufacturing enterprises, small and medium manufacturing enterprises. The allocation is 54 crore. How do you allocate 54 crore to champion SMEs? I'm afraid this budget is cautious, parsimonious, forgetful of the past year, Yes, and this will vanish. It has already vanished from the newspapers. Another minister and another deal is occupying the front pages now. The finance minister and the finance minister's budget speech has vanished. This is a forgettable budget which has been prepared by a finance minister who forgot her promises made in this house last year. श्रीमान अरुण सिंह जी। in finance. धन्यवाद सभापति जी, आपने हमको बोलने का मौका दिया। और यह 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार बजट पेश किया है, इतिहास है। और अभी तमिलनाडु से आते देश के वित्त मंत्री हैं और यह सब देशवासियों को यह बजट पेश करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय सभापति जी, जब बजट का साइज देखें तो बजट के साइज को देखेंगे तो कुल मिलाकर के यह 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तो एक एक हेड ऑफ अकाउंट की जो चर्चा कर रहे थे, इनके समय में अगर पूरा बजट का साइज देखें तो 16.65, मतलब पहले से लगभग 3 गुना बजट का साइज हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का। और क्योंकि यह इस बात को, इस बजट को अगर हम देखेंगे तो यह लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना, जो हमारी आर्थिक प्रगति है उसको और तेज गति से किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना, और सबके साथ सबका विकास, इसके मूल मंत्र को भी संकल्प के साथ सिद्धि करने का इस बजट में दिखता है। सर, अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम सबको ये देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के 12.5 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.20 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनके समय 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए होता था। 17.72 लाख करोड़ रुपए यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है। 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देने जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो हमने नेक्स्ट जेन जीएसटी को देखा कि यह जब लागू हुआ और उसके माध्यम से देशवासियों ने बचत उत्सव के रूप में मनाया, 1 लाख करोड़ रुपए देशवासियों को इस जीएसटी को लागू करने से, दर कम करने से उनको लाभ हुआ। तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ाना, दूसरी तरफ जीएसटी के माध्यम से लोगों को लाभ देना, उसके बावजूद भी अगर फिजिकल डेफिसिट 4.3% अगर अगले साल का लक्ष्य रखा है तो मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं किया। सर, 2013-14 में हम सबको ध्यान ही है कि जब कांग्रेस का समय था, इनकी सरकार थी, तो पॉलिसी पैरालिसिस था, निराशा का वातावरण था, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में हम थे। उस समय भी फिजिकल डेफिसिट 4.5% था सर, लेकिन 4.5% वो फिजिकल डेफिसिट वो सही नहीं था। अगर रियल फिजिकल डेफिसिट उस समय भी निकालते तो बहुत सारे अंडर प्रोविजनिंग थे, फर्टिलाइजर है, फ्यूल सब्सिडी है, ऑयल बॉन्ड से, अगर हम जोड़ देते तो यह 7% से ऊपर फिजिकल डेफिसिट उनके समय जाता। तो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने को देखना चाहिए सर। आज रेवेन्यू डेफिसिट की जो बात करते सर, जब यूपीए के समय था तो 3.2% वो रेवेन्यू डेफिसिट था। सर, 2016-17 में चिदम्बरम जी बोले थे यहीं पे कि हमको कोशिश करना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0% ले आने की कोशिश करना चाहिए, और जो इनके समय 1.8% था। लेकिन आज वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जो अगले साल होगा उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.03% में लगभग 0% होने वाला है। यह बजट उठा के देखेंगे तो हम सबको देखने को मिलेगा सर। सर, जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते सर
तो कुल मिला करके जब 12.2 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखेंगे तो पूरे बजट का 22.8% यह पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, जो कि लगातार हर बजट से अगर तुलना करें तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और यह बताने की आवश्यकता जरूर है कि यूपीए के समय में कैपेक्स एक्सपेंडिचर का 13-14 का देखें तो 15%। अरे भाई, आपके समय 15% होता था, हमारे समय में 22.8%। इतनी बड़ी वृद्धि हुई तो आप कैसे इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं? सर, डेट टू जीडीपी अगर हम देखें सर, तो डेट टू जीडीपी में जहां अमेरिका का 125% है सर, यूके का 101% है, चाइना का 96% है, फ्रांस का 113% डेट टू जीडीपी है, जापान का 230% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और जहां तक भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत की डेट टू जीडीपी 55% है, 55.6%, जिसको 50% तक 2030 तक ले जाया जाएगा। यह होता है वित्तीय अनुशासन और किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो यह इस प्रकार के जो अनेकों जो प्रयास किए गए कि सस्ते लोन को मोबिलाइज किया जाए, उसी का यह नतीजा है कि इस प्रकार से हमको डेट टू जीडीपी देखने को कम मिल रहा है। सर, टैक्स टू जीडीपी सर यह जो है अभी 11.2%, पहले 10.09% होता था। इसका कारण यह है कि जो आयकर जो हमारे टैक्स पेई हैं, आम नागरिक है, उस पर सरकार का धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है, बहुत अधिक मोदी जी सरकार पे भरोसा बढ़ रहा है। उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूं सर। जब 2014-15 में 4.07 मतलब 4 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी 2014-15 में, 4 करोड़ से बढ़कर के पिछले साल देखे तो 9.2 करोड़, दो गुना से अधिक इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल हो रही है। यह विश्वास बढ़ा है सर। उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट अगर हम देखें सर, तो डीमैट अकाउंट में भी जो पहले जो 2.5 करोड़ थे, अब 12 करोड़ अकाउंट अधिक खुले हैं, 12 करोड़ अकाउंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग टैक्स दे रहे हैं, और इसलिए टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे रिफॉर्म्स के माध्यम से उनको सहूलियत दी गई है। सर, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो यूपीए की सरकार थी तो लगभग 4.8 तक पहुंच गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र पे हम लोग चल रहे हैं। और उसके कारण सर जो आज भारत रक्षा क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है। मोबाइल का एक्सपोर्ट 2.9 लाख करोड़ रुपए जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट नहीं करते बल्कि 2.9 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से क्रांति आई है सर। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2013-14 से 8 गुना अधिक एक्सपोर्ट करके 3.3 लाख करोड़ रुपए, इसी प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर। और सीधा सीधा अगर आंकड़ों में देखें तो जो इनके समय लगभग 4.8% पर थोड़ा कम हो गया होगा, आज हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है या 1% से भी कम 0.6% है, 0.6% है। वह दिन दूर नहीं, हम जो यह करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं रहेंगे, हम करंट अकाउंट बहुत बड़े सरप्लस पे जाएंगे 2-3 सालों के अंदर, जो प्रयास हो रहा है सर। आज फॉरेक्स रिजर्व $409 बिलियन है, जो इनके समय $300 बिलियन होता था। मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा सर, पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर है। सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेकर के सभी विश्व की जो संगठन है, वो भारत की नीतियाँ, भारत के जो योजनाएं हैं, भारत की कार्य प्रणाली है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वह देख रहे हैं कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल हब बनता जा रहा है। उसी का नतीजा देखेंगे तो एक साल के अंदर यह रिकॉर्ड है कि भारत ने जो एग्रीमेंट किया, 6 एग्रीमेंट किए थे। इंडिया ओमान CEPA एग्रीमेंट हुआ, उसके साथ इंडिया न्यूजीलैंड FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडिया UK CETA एग्रीमेंट हुआ, इंडिया EU अभी जो लेटेस्ट हुआ FTA एग्रीमेंट हुआ, और सबसे बड़ा इंडिया US ट्रेड डील हुआ। ये भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य, भारत की शक्ति को दर्शाता है कि भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है। प्लीज सर, आज इन्फ्लेशन
Yes, उधर वाले you'll बैठे get हैं, जरा opportunity मैं to बताता हूं, उधर वाले बैठे हैं, जरा आपको लोगों की बारे में जरा थोड़ी भी समझ हो तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो एमएसएमई, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको कितना बड़ा लाभ होने वाला है, कितना वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यह सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है सर। अगर इन्फ्लेशन देखे सर, तो इन्फ्लेशन भी सर हम सबको मालूम है, इसी सदन में खड़े होकर के कांग्रेस के वित्त मंत्री कई बार बोलते थे कि वी आर ट्राइंग टू कर्टेल द इन्फ्लेशन रेट, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार बोलते उतनी बार इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता। इनके समय जो महंगाई दर जो था इन्फ्लेशन, वह 9.49% था, अब जाकर के 2% से भी कम महंगाई रेट है। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियां, प्रधानमंत्री जी को उपलब्धि है सर। जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, चूंकि आपने कहा कि सभी मंत्रालयों से जुड़ा हुआ ये बजट होता, तो सभी मंत्रालय, हम कुछ मंत्रालयों की चर्चा कर देते हैं सर। जो रोड ट्रांसपोर्ट है सर, इसमें कल्पना करिए, इनके समय 31,302 करोड़ रुपए, अब जाकर के 3,09,873 में 10 गुना रोड ट्रांसपोर्ट में यह मोदी सरकार एलोकेट कर रही है, यह उपलब्धि है। और इसी के कारण, अरे दिग्विजय जी, इसी के कारण आप एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, इसी के कारण वंदे भारत ट्रेन पे चलते हैं, इसी के कारण नए नए एयरपोर्ट बने हैं, इतना पैसा एलोकेट हो रहा, तो आप लोग ही आनंद ले रहे हो सबसे जी, और आप लोग तारीफ नहीं करो, बड़ी बात तो है सर। अब हमारे शहरी जो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय सर, इसको भारी भरकम बजट दिया गया है, 85,522 करोड़, इनके समय 1,486 करोड़ रुपए होता था। इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे हर गरीब के पास मकान होना चाहिए, 4 करोड़ मकान बन गए, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब देश का ऐसा न बचे जिसके पास उसका आशियाना न हो, उसका घर न हो। इस बात को यह प्रतीत होता है कि 85,000 करोड़ का बजट इसलिए अलॉट किया गया है कि सभी गरीबों के पास मकान रहे, एक गरीबों को आश्वस्त करने के लिए इतनी बड़ी बजट इसमें रखी गई सर। रेलवे के संबंध में सर, रेलवे तो सर एक तरीके से कहिए तो रेलवे के जो नई नई ट्रेनें चल रही सर, और जिस प्रकार से पटरियों में उनका नई पटरियां भी बन रही, चौड़ीकरण भी हो रहा सर। और रेल के क्षेत्र में सर, कल्पना करिए सर, आपके समय, यूपीए के समय 2013-14 से सर केवल 26,000 करोड़ रुपए में क्या करेंगे। हमारे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जो एलोकेशन हुआ 2,81,377 करोड़, मतलब 11 गुना वृद्धि। कोई कल्पना कर सकता है कि इन 10-11 सालों में रेलवे का बजट इस प्रकार से 11 गुना बढ़ा है सर। क्योंकि हम कहते हैं कि जब रेलवे तेज चलता है तो देश की प्रगति भी तेज हो जाती है। अधिकांश लोग रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं सर। इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल का चलाने की, उनका विकास करने का घोषणा हुई है। यह आर्थिक प्रगति में एक तरीके से 4 चांद लगाने का काम करेगा सर। डिफेंस के क्षेत्र में सर, हमने सब देखा, सब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे ही देश में बने हुए हथियार, हमारे ही देश में बने हुए मिसाइल किस प्रकार से जाकर के पाकिस्तानी में तबाही मचाने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। और रक्षा क्षेत्र में बजट है सर, पहले 2,53,000 करोड़ रुपए इनके समय में होता था, अब 7,84,000 करोड़ रुपए, और पिछले बजट से इस बजट में देखेंगे तो भी 15% की लगभग बढ़ोतरी की गई है सर। किसान हमारा अन्नदाता सर, और अन्नदाता से बढ़कर के कहें तो वो राष्ट्र निर्माता ही है। सबसे अधिक अगर लोग काम करते हैं तो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं सर, उसमें भी 4.5 लगभग 5 गुना उसमें फंड का एलोकेशन बढ़ाया गया। किसान सम्मान निधि सर, एक बार आपने लोन वेवर किया और उसको बार बार कई साल उसको बोलने का काम किया कि हमने लोन वेवर किया। यह तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने खजाने से, सरकार के खजाने से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4,09,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में दे दिया है। इसलिए किसान उनको अपने मसीहा के रूप में देखता है। आपके यहाँ भी किसानों को मिल रहा होगा, और इसीलिए तो आप इसको, असली बात यह है कि हम क्यों चुनाव जीतते हैं ना, यही सब कारण है। जब किसान को, गरीब को सीधे उनके अकाउंट में पैसा मिलता है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है,
तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और एक तरफा हमको समर्थन देने का काम करता है। और इसका नतीजा सर कई कृषि योजना, कई प्रकार के जो हम कृषि को प्रोत्साहन करने की योजनाएं ले आए, उसका नतीजा देखिए सर। आज अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन 357 मिलियन टन आज अन्न का उत्पादन है, और आप भी समझिए आपके समय 251.6 लाख मिलियन टन था। चावल का उत्पादन सर, चावल का उत्पादन 150 मिलियन टन है और विश्व में नंबर 1 है। दूध का उत्पादन नंबर 1 है। मछली के उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई है। पशुधन में 195% की वृद्धि हुई है। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में 362 मिलियन टन का उत्पादन हुआ सर। सभापति महोदय, इसी सदन में कांग्रेस की सरकारें केवल खाद्य सुरक्षा की बात करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश वैश्विक कृषि नेतृत्वकर्ता बन रहा है, जहां किसान की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और एक साथ चल रही है सर। सर एक चीज मैं जरूर बताऊंगा सर, ये मनरेगा के बारे में इन्होंने बहुत शोर मचाने का काम किया। मनरेगा सर, मनरेगा के बारे में कि सरकार उसका बजट खत्म कर रही है, मनरेगा को खत्म कर दिया, पैसा उसको नहीं दिया गया। नीचे इतना भ्रम फैलाने की असफल कोशिश की, क्योंकि जमीन में तो कोई जना लोग इनकी बात को न सुन रहे थे न एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन सर जी राम जी का के बारे में जब इसमें हमने देखा बजट में सर, और आप सबने भी देखा हो, तो आपने तो मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए 2013-14 में देते थे, केवल 33,000 करोड़ रुपए। हमारे इस बजट में अगर देखें तो पिछली साल 88,000 करोड़ रुपए था, इस बार 42% बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपए जी राम जी के लिए निर्धारित किया। क्योंकि जब मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे कृषक श्रमिक हैं 100 दिन के जगह 125 दिन उनको हम काम करने का अधिकार दे रहे हैं, और ऊपर से जो उनको काम नहीं देगा पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रहे हैं, तो बजट भी उसी प्रकार से बढ़ा है। अब आपकी कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सुन ले, आपकी बोलती नीचे बंद हो गई है, क्योंकि ये बजट में इतना बड़ा एलोकेशन है। अब जाके आप समझाओगे तो कृषि श्रमिक दौड़ा लेगा आपको। इसलिए मेरा सलाह है कि आप नीचे जाकर के मनरेगा की बात मत करना। ये जमीनी आपको हकीकत, जमीनी हमको ग्राउंड रियलिटी समझा रहे सर। जल जीवन मिशन में ठीक है, पिछले बार थोड़ा कम खर्च हुआ क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं आया होगा, लेकिन इस बजट में 67,670 करोड़। भाई आप ये बताइए, आप किस नैतिकता के आधार पर प्रश्न कर रहे हैं? देश की आजादी के बाद नल से जल केवल 3 करोड़ घरों में कांग्रेस पहुंचा पाई थी। केवल 3 करोड़ घरों में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। आप किस नैतिकता से प्रश्न कर रहे हैं भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने गिरबान में झांकिए जरा, है हाँ, ये समझ ही नहीं रहे। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं सर। एमएसएमई के बारे में जरूर बात करूंगा सर। मैं एमएसएमई के सेक्टर के लोगों से बात हो रही है, इतने प्रसन्न है सर, इतने खुश हैं वो कि जो इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग जो सिस्टम है उसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि उनको पेमेंट तुरंत मिल जाएगा, उनकी जो क्रेडिट अपना वर्किंग कैपिटल हो और मजबूत होगा। तो वो लोग काफ़ी इसको जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को जो अनाउंसमेंट किया है जेम से लिंक करते हुए, यह बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जो देश में सबसे अधिक दूसरे नंबर एम्प्लॉयमेंट को देता है तो एमएसएमई है सर। ऐसे इनकम टैक्स में भी सर, इनकम टैक्स में बहुत सारे लोगों को, आम जनमानस को लाभ हो। पिछली बार जब 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स छूट दिया गया तो उसको बहुत प्रशंसा हुई है, उसका लाभ इस साल में भी मिल रहा है। ऐसे कई इसमें और भी घोषणाएं की गई है कि जो हमारा फर्स्ट जो पहले, जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी का असेसमेंट होता है उसमें टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाती है, तो पेनाल्टी पे ब्याज लगने वाला अमाउंट जो है फर्स्ट अपील का जब तक का उसका निर्णय नहीं आएगा उस पर किसी प्रकार का वह ब्याज नहीं लगेगा सर। ऐसे टीसीएस ऑन एजुकेशन सर 5% के जगह 2% किया, लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है।
कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं सर, इस बजट के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लक्ष्य को सुनिश्चित किया गया है सर। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विश्वास को साकार करता है, विकसित भारत कोई सपना नहीं बल्कि सुनियोजित संकल्प है, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी है, समावेशी भी है, विश्व के लिए विश्वास का केंद्र भी है। इस बजट के माध्यम से सर मैं यही कह सकता हूं कि पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं और आगे भारत कहां पहुंचने वाला विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सर, जब 10 सेमीकंडक्टर यूनिट लग चुकी हैं और उसके साथ साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसकी घोषणा हुई है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हो रही है और यह सर एक तरीके से कहिए कि जो हम कभी सोचते नहीं थे कि ये भारत को भी करना चाहिए, भारत को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए था, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सब क्षेत्रों में, चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर हो और चाहे इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र हो, उसमें बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सभी देशवासी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी का भी ढेर सारा अभिनंदन करता हूं इतने अच्छे बजट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी। Thank you, sir. As I stand to speak on the union budget of 2026-2027, I would like to thank my party, and I have been listening to Honorable Member of Parliament from the BJP who just spoke. But what is important about this budget, sir, is not what this budget is actually addressing. What is jarring to my ears and to the common man of this country are the issues on which this budget is silent. The second thing, which is glaring to my eyes, is huge loopholes when it comes to the data that the Honorable Finance Minister is depending on to tell us about growth, poverty elevation, etc. Last but not the least, sir, which we have been saying for the last 4 or 5 years, that discrimination and disparity in the way you treat the states cannot, under any circumstances, ensure the growth of India as a nation. So, some examples of manipulation of data. 9 consecutive budgets, Honorable Finance Minister has presented, matching the number of budgets that Honorable Member, former Finance Minister, Mr. Chidambaram has presented. It is history, no doubt, but it is also history that the first time in this nation, a Finance Minister has given us 6 budgets without a census. So, Raja को पता ही नहीं इस देश में प्रजा कितनी है और उस प्रजा की हालत क्या है. The question I ask myself that now that the census data, the census work has started, sir, and they're talking about digitization and self-enumeration, I want to ask the government that if you were planning on self-enumeration, then what is the reason that you did not start the census where people of India could have sat in their homes during the pandemic and given you the data and the census would have started? It is a shame that a Finance Commission of India, which devolves funds to the states on the basis of population, has been working without a census for 6 years. So, secondly, we hear about 25 crore people who have been pulled out of the multi-dimensional poverty over a decade. If that is true, I'm very happy, sir. But I would like to ask for a clarification from the Honorable Finance Minister of India that Niti Aayog, the think tank, is it a fact that to declare someone non-poor, one of the indicators that have been included in the index is Jan Dhan account, and 23% of the Jan Dhan accounts are inactive, sir. In the Lok Sabha, they have said
13 crores out of 56 crores accounts are inactive. So why should we believe that 25 crore people have been pulled out of poverty?